It's the 22nd of July. We are here in the Sitapur area of New Delhi at Mitr Trust, which is a home for the transgender community. They fall under the scheme Garima Griha, which was established by the Ministry of Social Justice and Empowerment. This is said to be a safe space for the transgender community. Now, yesterday night, according to the people who live here and the community members who live here, around 12 a.m., members of the UP police and Delhi police, they didn't show identification but were in uniform, forced their way into this particular shelter home looking for someone named Aditya. According to the people who live here, Aditya is a trans man who came into this space looking for a safe place, claiming that he was being tortured by his family. Yesterday night, when the police came, they took him away saying they needed a statement from him as his parents had filed a missing complaint. Now, Aditya is not a minor, he's an adult who allegedly came here by his own will. When members of the trans community who live here protested and made their way to the Dabri police station, which is the closest police station about 300 meters away, they were told that they don't know where Aditya is. Aditya was also taken away in a private car and not a police vehicle. At the police station, 4 to 5 of the members of the trans community who went there were beaten up, harassed, and even sexually assaulted, according to them. We are here today to listen to what exactly happened. He shared one thing that he was house arrested. He was kind of, behind, locked doors for 2.5 years. The parent of this person did not allow him to go anywhere, to meet anyone. He somehow managed to escape. The day he come, he was so sad. He was not trusting anyone. But it took just one day, and he was so happy, and he was asking about me because I run, this I started India's first modeling agency, trans modeling agency. He said, I know Rudrani, please, I want to meet her and I want to be a model. This is what he said. And now this guy is gone. This is what he shared. If I get caught this time, my parents might kill me. Either they'll shoot themselves or they'll shoot me. मैंने उनसे पूछा कि सर क्या काम है आपको, तो उन्होंने बोला कि मैडम पहले गेट खोलिए, हम तब बात करेंगे। मैंने कहा सर एक तो यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा बंदा नहीं है, एंड लाइक आई हैव नॉट द परमिशन टू अलाउ यू टू एंटर। और सबसे बड़ी बात कि रात के 1 बजने वाले थे उस टाइम पे, तो आपको इस टाइम अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप सुबह आ जाइएगा। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं मैडम पहले ताला खोलिए, हम अंदर आके ही बात करेंगे। मैंने ताला खोला, वो लोग ऊपर आए, वो बैठे। मैंने उन्हें बोला कि सर आपको विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, इट इज़ मैंडेटरी। तो उन्होंने बोला कि कर देंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। पर फिर भी मैंने बोला, उन्हें फ़ोर्स करा कि प्लीज़ आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आगे की बात करूँगी। उन्होंने फिर उसके बाद एंट्री करी। जब ये सब कुछ हो गया, ये घटना हो गई, जब हमने कॉल करने की कोशिश करी तो पता चला वो नंबर गलत है। वो अपने आप को पुलिस वाले कह रहे थे कि हम पुलिस से हैं, और ये जो आपके यहाँ जो आदि रहता है उसके पेरेंट्स ने यूपी में कंप्लेंट लिखवाई है मिसिंग की। पुलिस वालों ने पकड़ के उसे खींच रहे थे क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उन्होंने उसे हाथ पकड़ के थोड़ा नीचे खींचा और बोला बेटा तेरे घर वाले आए यूपी से। तो फिर मैंने बोला कि देखिए आप एक काम करिए, यहीं बयान ले लीजिए। उन्होंने हमें बोला कि नहीं हम अधिकारी के सामने ही बयान लेंगे। तो बोला सर मैं ऐसे अलाउ नहीं कर सकती इसे जाने के लिए, बिकॉज़ ये इतना रात का टाइम है, एंड मैं नहीं कर सकती अलाउ। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए साथ में। मैंने कहा ठीक है मैं साथ में चल लेती हूँ। तो मैंने अपनी इन 2 फ्रेंड्स को ले लिया साथ में और गार्ड भैया को साथ में ले लिया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि वो गाड़ी तो पहले ही आगे निकल गई, वो पुलिस स्टेशन में घुसी ही नहीं। और जब हम लोग अंदर गए तो पुलिस वालों ने हमें स्टार्टिंग में ही रोका कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। तो हमने बोला कि अभी सर यहाँ पे 4-5 पुलिस वाले आए थे एक लड़के को लेकर। उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं आया। उन्होंने गालियाँ दी बहुत गंदी गंदी और बोला यहाँ से निकलो, यहाँ तमाशा मत करो। और मैं वहाँ अंदर सिर्फ इतना कह रही थी लोगों से कि आप मुझे रिटर्न लेटर दे दीजिए प्लीज़, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतने में उन्होंने सिया का वो गला पकड़ा और इसे धक्का दिया। सिया ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन्हें बदले में वापस धक्का दिया। इस धक्के के दौरान पीछे से एक दूसरा पुलिस वाला आया लाठी लेके, और वो गार्ड भैया को कहने लगा तू इन छक्कों को यहाँ लेके आया है, तू कहाँ जा रहा है। क्योंकि वो भैया थोड़ा डर गए थे, वो पीछे जा रहे थे। उन्होंने भैया को पकड़ा और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। मैं उनको बचाने गई गार्ड भैया को, तो तुरंत मुझे ही उन्होंने मेरे ऊपर एक जानवर से भी बढ़ के गंदा ट्रीट किया। और मुझे यही फील होता था कि मैं वहाँ पे एक भेड़ियों के बीच में हूँ, और मुझे ऐसे पकड़ लिया था, मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ मारा, और फिर मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से उन्होंने मार दिया यहाँ पे, फिर इधर भी मारा, और एक ने पकड़ लिया था बाल पकड़ के,
और फिर मेरे पैर भी मेरी स्वेलिंग है, इस पे भी मार दिया उन्होंने। फिर यहाँ मेरे प्राइवेट पार्ट पे पैर से मार रहे थे और बाल भी पकड़ लिए थे और बार बार बोले थे तुम लोग, मतलब ऐसे बहुत सारे आते दिल्ली में, तुम लोग नकली हो, फलाना हो, ढिमकाओ, बहुत कुछ वो गंदे वर्ड यूज कर रहे थे। कितने पुलिस वाले आपको मार रहे थे? 10 से 15 और पुलिस। आप 6 लोग थे? हम लोग 6 लोग थे। जब उन्होंने इनको मार मार के भगाया, मैं वहाँ पीछे अकेले रह गई थी। उन्होंने मुझे घसीटा अकेले देखकर और उन्होंने मुझे बहुत मारा। उनमें से एक ने मेरे पैर पे लाठी मारते हुए कहा, उठ के भाग, और नहीं भागेगी तो मारते रहेंगे और जान से मार देंगे। Does this happen often that the police show up? Is there harassment from the police side? This particular incident where there's a lot of violence happen, and I believe I see this one as a kidnapping. They actually abducted this person, and they took this person away. It's not that the police came here for the first time. It happened in past, but somehow we did counseling with the police. We did counseling with the person of the trans person who were they looking for whom they came here, and it was very smooth process. The parents saw this place that the child is doing good, they're getting education, and they were happy and satisfied, and they went away, and the police also did not say anything. But this time I see it very fishy. I see something very wrong. When Newslaundry visited the Dabri police station, the station house officer Satish Chandra refused to speak to us. Later, when we contacted Harshvardhan, Delhi South DCP, he informed that Aditya was with Badalpur police. In the press release, the police stated that the UP police had sought assistance from Dabri police to search for Aditya, against whom a missing complaint had been lodged. Regarding the alleged assault in the police station, the DCP said that 6 to 7 transgender persons had come and, quote, became aggressive and obstructed the police personnel on duty at the police station. Some of them also removed their clothes and started using very abusive language. Minimal force was used to disperse them. We are sensitive to the concerns of the transgender people. I have asked my officers to engage them in constructive dialogue and make them understand that they should not take law into their own hands. What is this shelter home is a safe space for all the transgender who are either disowned by the families, or they have been rejected, or they are put in such a terrible condition that they run away from their homes. And most of the people who come here, they have been sexually abused, physically abused, mentally abused. They have no proper education, and most of the people who before coming here, they only thought of either doing begging or doing sex work, especially when we speak of trans women. And speaking of trans men, the only future they thought of a forced marriage with a male person, and the idea of having a family was there. But now, as they are living here, now they have this thing that they want to get education, they want to have some kind of skill development, and they want to live their life according to their own terms, which is, I think, which is not something they're asking for sky. I mean, it's something which is a very simple thing, that they want to live their life with respect and dignity. मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें सपोर्ट करें, हमें न्याय दिलाएं। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीना का अधिकार है, और हमारे भाई की खोज करें। आदित्य जहाँ भी हो, एज ए सेफ हमारे आदित्य को लेके आया जाए। बस यही रिक्वेस्ट आप सबसे। We need to fight together. It cannot happen like this. If they'll leave and they'll go. We all will stand together and fight against this. We, being an independent platform, depend on our readers, viewers and listeners. Support independent media by subscribing to Newslaundry. Go to newslaundry.com, click on the subscribe button at the top and pay to keep news free.